Okay, start from here. ये क्या है? माइक टेस्टिंग कर रहे हैं क्या? ओके, चैप्टर 4 में अब तक हम लोगों ने देखा कि ये की स्टोन हैबिट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। और जो नए सीईओ हैं दैट इज पोल ओनील। ऑलराइट, कौन सी कंपनी के सीईओ बने हैं? अल्कोआ एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, और क्या बात हुई है जब वो आए कंपनी में, तो क्या वो कोई प्रॉफिट इंक्रीज करने की बात की है क्या? सेफ्टी पे अनडाउटेडली सारे जितने भी वर्कर्स है, जितने एम्प्लॉइज है, वो अग्री करेंगे। सुनो, अब तक ये डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा ओलंपिक प्लेयर का तो कोई डिस्कशन अब तक आया नहीं है, अब आएगा, ठीक है। एक माइकल फेल्प्स करके हैं, अगेन सेकंड कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। वो ओलंपिक गेम कैसे जीत पाए, कौन सा की स्टोन हैबिट है जो वो ग्रैब किए और जीत पाए, ठीक है, वो आगे आने वाला है। इसके अलावा अगर आपको वेट लूज करना है तो वेट लूज करने के लिए कौन सा की स्टोन हैबिट होगा, फाइन, ये सब चीज अब हम आगे देखेंगे। लेट इट बी, आप लोग अब शुरू करेंगे, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, पेज नंबर 126। अपने ऐसे भी हार्ड कॉपी है नहीं आपके पास, इधर से ही पढ़िए। शुरू करिए। एक मिनट, 26 नहीं है ना? When the company, अरे आवाज नहीं, ये ओके फाइन, स्टार्ट ना। प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस। अब यहाँ फोकस करिए। कोई भी शुरू कर लीजिए भाई। यहाँ से जो सबसे पहला लाइन है ना, वहां से। Not working, not working. बढ़िया, ऐसे अपने बहुत धीरे हो जाए। लास्ट बेंच, आप ही शुरू करिए। आज हमारा क्लास धन्य हुआ है, आप लोग हैं क्लासरूम में। रोहित स्टार्ट। रोहित, you start from here. I am really glad to be here. यहाँ भी आके बैठ सकते हैं अगर वहां से दिख नहीं रहा तो। बैग हटा लीजिए। आई एम रियली ग्लैड। माइक नहीं काम कर रहा। I am really glad to be here. So, Try to listen, everyone. Full of workers at a smelting plant in Tennessee. A few months after he was hired, not everything had gone smoothly. Wall Street was still panicked. The unions were concerned. Some of Alcoa's vice presidents were milked at being passed over for a top job, and O'Neill keep talking about worker safety. I am happy to negotiate with you about everything, O'Neill said. He was on a tour of Alcoa America plants, after which he was going to visit a company's facilities in one other countries. But there one thing I am never going to negotiate with you, and that's safety. I don't ever want you to say that we haven't taken every step to make sure people don't get hurt.
If you want to argue with me about that, you are going to lose. The brilliance of the approach was that no one, of course, wanted to agree with O'Neill's about worker safety. Unions had been fighting for better safety rules for years. Managers didn't want to argue about you, either since injuries mean lose productivity and low morale. What most people didn't realize, however, was that O'Neill's plan for getting the zero injuries entailed the most radical real realignment in Alcoa's history. The key of protecting Alcoa employees, O'Neill believed, was uh, understanding why injuries happen in the first place. And to understand why injuries happen, you had to study how the manufacturing process was going wrong. To understand how things were going wrong, you had to bring in people who could educate workers about quality control and the most efficient workers processes. So that is good to be easier to do everything right, since correct work is also safer work. In other words, to protect workers, Alcoa needed to become the best, most streamlined aluminum company on earth. O'Neill's safety plan, in effect, अच्छा streamline जो है ये भी again regular using word है. What do you mean by this? Most streamlined aluminum company on the earth. Well organized. I'm professional. Yeah, I'm really nice company. कंपनी के बारे में आपको तारीफ की गई है. Well organized. Obviously good work. Well organized, most required. Yes, I'm professional. ठीक है. You can use this word again. I'm continuing. He identified a simple cue, employee injury. He instituted an automatic routine. Anytime someone was injured, the unit president has to report it to O'Neill within 24 hours and present a plan for making sure the injury never happened again. And there was a reward. The only people who got promoted were those who embarrassed the system. Embrace the system. Embrace the system, sorry. Unit president were busy people. The contact O'Neill's within 24 hours of an injury. They include to hear about an incident from their vice presidents and soon as it happened. So vice president needed to be a constant communication with floors manager, and floor managers needed to get workers to raise warnings as soon as they saw a problem and keep a list of suggestions nearby, so that when the vice president asked for a plan, there was an idea for already full of possibilities. To make all of that happen, each unit had to build new communication systems and made it easier for a lowest worker to get an idea to the loftiest executive as fast as possible. Almost everything about the company's rigid hierarchy had to change to accommodate O'Neill's safety programs. He was building new corporate habits. Okay. तो क्या क्या हुआ discussion? Who can info? Who can info? यहाँ तक जो हम लोग पढ़े. बस रीडिंग सुन ली है, क्या कुछ दिमाग वगैरह नहीं चला? हम यहाँ वो लोग अपनी कंपनी को मैम ओनिल बेटर बनाने के लिए मैम वो बता रहे हैं कि हमें क्या क्या काम करना है जिससे वो बेटर हो जाए. वही बोल रहे हैं कि फ्लोर मैनेजर को मैम कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उन्हें 24 आवर्स के अंदर मुझे फ्लोर मैनेजर को ना मैम अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जितने भी फ्लोर मैम फ्लोर मैनेजर इधर देखिए किसको रिपोर्ट करना है. मैम वाइस प्रेसिडेंट यूनिट प्रेसिडेंट रिपोर्ट करेंगे डायरेक्ट पॉल ओनिल को. यस मैम within 24 hours. मैंने 24 आवर्स मैम और फ्लोर मैनेजर को मैम पूछना है कि वर्कर्स को मैम क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है. और इसकी वजह से क्या हुआ आगे?
As soon as they saw a problem, they प्लान वगैरह भी वर्कर देंगे. एक आइडिया बॉक्स रखा गया, ठीक है, जिसमें से वर्कर बहुत सारे आइडियाज के साथ आ पाए. awareness about increasing of म्यूट ये scientific management created awareness about increasing operational issues at the shop floor level by adopting systematic methods against the rule of thumb which was prevalent at that time. However, from the point of view of the development of अरे यार कौन है ये? theoretical एक framework, मिनट, the जो भी पढ़ रहे म्यूट करके पढ़िए, नजर भी नहीं आ रहे. Okay, let me read and see. I think लफे सबसे weakest executive लग रहा है पढ़ के यहाँ पे. Hold on, to make all of that happen, each unit had to build new communication system that made it easier for the lowest worker to get an idea to the सबसे वीक एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, एज फास्ट एज पॉसिबल, या फिर जो लोनली है, ठीक है, सबसे अलग जो एम्प्लॉय है, ठीक है. एग्जैक्ट मीनिंग तो यू कैन रेफर, बट ये सेंटेंस पढ़ के ऐसा ही लग रहा है. ओके, डूफेस्ट अकेला ही बोलते हैं हम लोग. रेफर टू डिक्शनरी. अब यहाँ से पढ़िए, एज अल्कोहल सेफ्टी पैटर्न, ये अब कोई और पढ़िए चाहिए. रोहित, अंकित आइए. कम प्लीज. From here, as alcohol safety pattern shifted, silence. As alcohol safety patterns shifted, other aspects of the company started changing with the start-line speech as well. Rules that unions had spent decide opposing, such as measuring the productivity of individual worker, were the suddenly impressed because such measurement helped everyone figure out when part of the manufacturing process was getting out of whack, posing a safety risk. Policies that managers has long resisted, such as giving worker autonomy to shut down a production line when the pace become overwhelming, were now welcomed because that was the best way to stop injuring before the occurs. The company shifted so much that some employees found safety habits spilling into other parts of their lives. 2 or 3 years ago, I am in my office looking at 9th Street bridge of the window, and there are some guys working who aren't using correct safety procedure. But who said this? ये हैं अलग पर्सनालिटी, अल्कोहल के करंट सेफ्टी डायरेक्टर. ठीक है, ये कहाँ देख रहे हैं? अपने ही बिल्डिंग से आउटसाइड विंडो कोई काम कर रहा है. ठीक है, मतलब कोई और बाहर का आदमी. देखिए आगे, जेफ शॉकी, यहाँ से पढ़िए. one of them was standing on top of the bridge guardrail, where the other held on to his belt. They weren't using safety harness of ropes. They worked for some companies that has nothing to do with us, but without thinking about it, I got out of my chair, went down 5 flights of the stairs, walked over the bridge, and told these guys, "Hey, are you risking your life? You have to use your arms and safety gears." The men explained
there, the men explained their supervisor has forgotten to bring the equipment, so Shoki called the local of operational safety and healthy administrative office and turned the supervisor in. Another executive told me that one day he stopped a street excavation near his house because they didn't have a trench box, and gave everyone a lecture on the importance of proper procedures. It was the weekend and he stopped his car with his kids in the back to lecture city workers about trench safety. That isn't nature, but that kind of point we do this stuff without thinking about it now. O'Neill never promised that he forced on worker safety about increasing alcohol profits. However, as his new routine moved through the organization, costs came down, quality went up, and productivity skyrocketed. ये जनरली हम कोई किसी चीज का प्राइस होता है तो न्यूज में भी जनरली ये वर्ड यूज होता है. If molten metal has injuring workers when it is splashed. छिड़कना, पड़ना, किसी चीज का छींटा पड़ना. Then the ये molten metal है injuring pouring system pouring system was redesigned which led और करूं क्या? वो मेरा 3 साल से नहीं अरे तो 3 साल में खाना नहीं खाएंगे अगर 2 दिन तो खाना भूल जाएंगे क्या? नहीं बाइक नहीं चलाएंगे तो बाइक चलाना भूल जाएंगे क्या? नहीं एक मिनट यहाँ तक ठीक है? Okay. Which led to fewer injuries. It also saved money because Alcoa lost less raw materials in splits. If machine kept breaking down, it was replaced, which means there was less risk of broken gears, snagging, and employees' arms. It also meant higher quality products because as Alcoa discovered equipment's malfunction. It's not working properly. Means not working equipments were not working properly. Were a chief cause of subpar ammonium. Researchers has found similar dynamics in dozens of settings, including individuals' lives. Take, for instance, a study for the past decade examining the impact of exercise on daily routines. When the people start habitually exercising, whereas infrequently as one a week, they start changing others. Unrelated pattern in their lives, often unknowingly typical. People who exercise start eating better and become more productive at the work. They smoke less and show more patience with their colleagues and family. They use their basically ये जो बताया जा रहा है कि कोई एक काम करिए तो बाकी ripple of activity start following that. ठीक है, जैसे यहाँ पहले कंपनी का वो एग्जांपल दिया गया ओनिल के बारे में. पहले एक चीज किए, बाकी चीज ऑटोमेटिकली फॉलो किया, प्रॉफिट भी अपने आप आया. अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हमको एक्सरसाइज अगर करना है, ठीक है, तो एक्सरसाइज अगर हम डेली करना शुरू करते हैं तो अनरिलेटेड पैटर्न इन देयर लाइफ ऑटोमेटिकली स्टार्ट फॉलोइंग. जैसे कि हु एक्सरसाइज स्टार्ट ईटिंग बेटर, खाना सही हो जाता है, मोर प्रोडक्टिव हो जाते हैं एज अ वर्कर, लेस स्मोक करना शुरू कर देते हैं, शो मोर पेशेंस विद कलीग. ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, दिमाग स्पिरिचुअलिटी शांत रहेगा और हम पढ़ाई भी बेटर कर पाएंगे, क्लास रेगुलर करेंगे, कोई क्लास हम बंक नहीं करेंगे. ये सब ऑटोमेटिकली फॉलो होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अब आगे वही चीज है. They use their credit card less frequently and say they feel less stress. It's not completely clear why, but many people
but many people. Exercise is a keystone habit that triggers widespread change. Exercise spills over the said James Prokaska. James Prokaska, University of Rhode Island researcher. अंकित दोबारा पढ़िए यार. कहाँ से ना? रोड Iceland. आइस का स्पेलिंग Iceland नहीं है, Island. डेली पढ़िए, कम से कम घर पे ही पढ़िए 1-2 पेज. Researcher. ये भी स्पिरिचुअलिटी से कम नहीं, ये आपके हैबिट चेंज को इनकलकेट करने की बात हो रही है कि इस यंगस्टर्स को आजकल हैबिट कैसे चेंज करना है, या कोई गलत आदत लग जाती है उसके कैसे रिकवर करना है नहीं पता होता. ये रिसर्च बेस्ड बुक है, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ग्रेजुअली हैबिट चेंज हुआ है. कैसे फर्स्ट चैप्टर में, कहीं तो है नहीं आप किसी क्लास में जो आपको पता होगा, फर्स्ट चैप्टर में कैसे भुलक्कड़ आदमी, मतलब जिसको याद तक नहीं रहता है, वो ग्रेजुअली सारा चीज डेली करने से एक हैबिट लूप फॉर्म हो गया. इससे क्या रिलेट करेंगे अपनी लाइफ में कि अगर हम कोई भी काम, मान लीजिए मेरा मैथ्स वीक है, कोई भी चीज अगर वीक है, प्रैक्टिस करते तो परफेक्ट हो जाता. ऑब्वियसली खाली कंसिस्टेंसी चाहिए. रीडिंग नहीं आ रहा है, हम रेगुलर अगर हम 1 महीना पढ़ेंगे तो क्या वापस नहीं आ पाएगा? ये फर्स्ट चैप्टर में है. चैप्टर 2 में क्या है, सारा चीज आप अपने लाइफ से रिलेट करिए जो जिस पोजीशन पे है. चैप्टर 2 में क्या, क्रेविंग की बात हो रही है. कोई नया हैबिट जैसे एक्सरसाइज ही करना नहीं हो पा रहा है, भाई काम चोर है, 5 बजे नहीं उठ सकते हैं, ठीक है, तो क्या चीज करेंगे, किस चीज का वो लालसा लाएंगे अपने अंदर जो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद थर्ड चैप्टर में हमने देखा, थर्ड ही चैप्टर था ना क्रेविंग. थर्ड चैप्टर क्या है, हाँ, कैसे हारने वाली कंपनी जो सदियों से हार रही है, तो अभी जो सदियों से फेल कर रहा होगा वो कैसे अब अचानक पास कर सकता है. वो आप अपने थर्ड चैप्टर से क्या था, गोल्डन हैबिट चेंज, गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, वो आप रिलेट कर सकते हैं. और अब है ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कैसे की स्टोन से आप बाकी सारा चीज ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा. की स्टोन नहीं, की स्टोन मतलब एक मेजर हैबिट, ठीक है. अगर मान लीजिए कैसे, जैसे यहाँ पोलो ओनियल के बारे में बताया गया कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं थी, वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, कंटिन्यूअस लॉस हो रही थी. जिसका भी आवाज आ रहा है प्लीज साइलेंस. हाँ, तो जैसे लॉस मेकिंग कंपनी थी, कंटिन्यूअस वो लॉस में जा रही थी, तो वहां वो जब सीईओ की तरह नियुक्त हुए, वो प्रॉफिट के बारे में बात नहीं किए. जनरली क्या होता है, कोई भी बोर्ड्स मीटिंग में यही सिनर्जी की बात होगी. अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो कैसे हम अपलिफ्ट करें, कैसे प्रॉफिट करें, कैसे कॉस्ट कट करें, कैसे एम्प्लॉय को बाहर भगाएं, यही सब बात होगी ना अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो. लेकिन इन्होंने क्या किया, एक मेजर चीज को किया, पकड़ा, क्या कि वहां की एम्प्लॉय हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से वो इंजर हो रहे हैं, ठीक है. तो अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये सोच के अगर डेली अगर कोई वर्कर जाएगा कि आज जा रहे हैं कल आएंगे घर वापस की नहीं पता नहीं, तो ऑब्वियसली वो ईमानदार कभी बन नहीं पाएगा वो कंपनी की तरफ. तो वो लोग वो क्या किए, एक कीस्टोन हैबिट, दैट इज एक चीज को वो पकड़े, दैट इज सेफ्टी ऑफ द वर्कर. उसी पे हम फोकस किया. उसके लिए तो कोई मतलब निराश तो नहीं होगा इस डिसीजन पे. तो हर जितने मेंबर थे सब तैयार हुए और ग्रेजुअली अपना बिलोंगिंगनेस फील किए वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है. बिलोंगिंगनेस फील किया मतलब अपना सा लग रहा था ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन इज थिंकिंग अबाउट अस. एम्प्लॉय के अंदर खुद ब खुद आया सारा चीज कि हाँ काम करना चाहिए. वो लोग खुद अपने तरफ से ही आगे बढ़ के प्लान बता रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करना चाहिए और कैसे वो ऑटोमेटिकली कितने टाइम के बाद प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई. सेम वे यहाँ एक्सरसाइज में देखो तो कीस्टोन हैबिट मतलब क्या, एक चीज जो हम अपने अंदर चेंज ले आएंगे और ग्रेजुअली बाकी अच्छा आदत ऑटोमेटिकली आपका फॉलो कर लेगा. तो इस केस में यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं उस केस में एक्सरसाइज एग्जांपल है, ठीक है. तो एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप स्मोकिंग का मन नहीं करेगा या कम स्मोक करेंगे. अगर आप कुछ अनहेल्दी खाएंगे, लगेगा भाई दिन भर एक्सरसाइज किए हैं पसीना बहाए हैं तो फिर ये अनहेल्दी खा के पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा. ऑटोमेटिकली बेटर खाना शुरू करेंगे आप लोग. यस, तो दिस इज कीस्टोन, मतलब एक मेजर आदत जो हम पकड़ लें और वो चेंज करेंगे तो बाकी आपका आदत ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा. ओके, आज के लिए इतना ही. और यहाँ अगेन रिमेम्बर द पेज नंबर 130 एंड प्लीज ये प्रोजेक्टर वगैरह का सेटिंग करके रखिएगा. 10 मिनट्स में पहले ही एक तो दे देती हूँ कि आपको फ्रेश होना है, फ्रेश होके आ जाइए, ठीक है. ये सारा सेटिंग आज देख लीजिए
पिछले क्लास में भी मैं बोली थी। एंड अभिषेक, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभिषेक नहीं है तो हर्ष, वो कोई नहीं है तो जो क्लास में रहेगा उनकी जिम्मेदारी, ठीक है। इससे पहले ये कनेक्टर ला करके रख लीजिएगा, माइक ला के रख लीजिएगा, ताकि ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना 2 दिन से, वो ना हो, ठीक है। नाउ गिव योर अटेंडेंस। क्वाइट। क्यों भाई, बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है? और ज्योति, आज आप घर पे कैसे, यहाँ क्यों नहीं आए? मैम तबीयत ठीक नहीं था। ओके। Please switch on the light. क्या यहाँ गपशप करने बैठे हैं? हाँ तो मत बोलिए, कई बार बोलिए कि जो भी बात कर रही हैं डिस्ट्रैक्शन होगा। एब्सेंट की जगह प्रेजेंट, प्रेजेंट की जगह एब्सेंट होगा। तो अब अटेंडेंस शुरू हो रहा है, आवाज कान में नहीं जानी चाहिए। एवरीवन ओके, लास्ट बेंच इधर, इधर से आवाज आ रही है। लेट मी फोकस नाउ। रोल 1। यस मैम, रोल नंबर 1। 2 3 यस मैम 3। 4 Yes, ma'am. 4. 5 यस मैम 5। 7 Yes, ma'am. 8 यस मैम। 9 okay 10 यस मैम 10। 11 12 13 Yes, ma'am. Yes, ma'am. 12. okay 13 14 यस मैम 15 14। 14। Present ma'am 15. 16 17 18 19 मैम 18। 18 okay 20 21 22 21. okay 23 24 20 25 26 27 26 डन। म्यूट कर लीजिए। 27 28 20 29 30 31 32 33 34 35 36 यस मैम 35। 37 38 39 39 present, ma'am. 40 41 Yes, ma'am. 42 Roll number 41. Ma'am 38 ma'am. नहीं बना 38. हो गया है। 42 43 43 प्रेजेंट मैम। 44 यस मैम 38 नहीं 44। बना मैम. Ma'am हाँ? 38. मैम 44। हो गया है। 45 46 यस मैम 45। 46 46 ma'am. 47 यस मैम 46 47। 48 48 मैम। 49 50 Yes 51 ma'am 50. 50 ma'am. अभिषेक मेहता राइट। रोल 40 हाँ 50 ma'am. 38 ma'am 38. इसके फिर ये डाल दूं।
51, 52, 51, 52, 53, Yes, ma'am. 54, 55, Yes, ma'am. 55. 56, Present, ma'am. 56. 57, Present, ma'am. 57. 58, 59, Present, ma'am. 59. 60, 61, 62, Present, ma'am. 62. 63, 64, 65, 66. Yes, ma'am. 65. Present, ma'am. 66. Okay, 67, 68, 69, Yes, ma'am. 69. 70, 71, 70, ma'am. 71, 72, 73, 74. 72. 73, ma'am. Okay, 74, 75, 76. 74, ma'am. 74. 74, ma'am. हो गया Ridran. 74. Okay, okay, okay. 77, 78, 79, 80. Yes, ma'am. 78. Okay, 81, 82. 99, ma'am. 81, ma'am. 81, ma'am. Okay, 82, 83, 83, ma'am. 84, 85, 86, 87, 88, Present, ma'am. 88. 89, 90, 91, Yes, ma'am. 91. 92, 92 present, ma'am. 93, 93, ma'am. 94, Yes, ma'am. 94. 95, Yes, ma'am. 95. 96, 97, 98, 99, 100, Yes, ma'am. 100. 101, 102. जितेंद्र, अब तक आपका नाम इस पे अपडेट नहीं हुआ है, खुर्शी सर से बात करिए. 102, 103, 104, Present, ma'am. 104. 105. Ma'am, 38 नहीं हुआ मैम. ठीक है. All right, thank you. See you next class.